Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will study about algae, protozoa and viruses. So in the previous videos we had also studied about bacteria and fungi. Now we are studying about algae. So what is an algae? Algae is a green substance. You can see in this picture it is a green substance and it always lives in watery conditions. Here you can see always in watery conditions or in moist climate. Okay, here in this picture also you can see green substance. It lives in watery conditions in water. So what is an algae? So algae are plant like organisms, which means they are like the plants. They are like the plants which can make their own food. Okay, they are the green plants which can make their own food. So algae are plant like organisms. They have cell walls and chlorophyll. Cell wall is a protective layer which is present only in the plant cell, and also chlorophyll is only present in the plant cell, not in animal cell. So these are the cell organelles which are present only in the plant cell, not in the animal cell. So cell wall, what is a cell wall? It is a protective layer. एक protective layer होती है जो कि protect करती है. It protects the cell of the plant. It protects the plant cell. Okay, and chlorophyll has the power to trap the energy of the sunlight. Okay, by which they can make their own food with the process of photosynthesis. So algae are green plants. So because they are green plants, they contain chlorophyll and they can make their own food with the process of photosynthesis. Okay, but they are, although they are plant like organisms, but they lacks root, stems or leaves. They lacks root, stems or leaves, or they do not have flower. Like you can see here, they do not have roots. उनमें जड़ें नहीं होती है. They have not stems, there is not leaf. So they lack this parts of plant. These parts of plant are absent in algae. But how they are plant like organisms? First point, that cell wall, they contain cell wall. Second point, they also contain chlorophyll. And third point, they can make their own food with the process of photosynthesis. Okay, but they lack roots, stems or leaves. This is an exception, that they do not have like the plants. Okay, now they are mostly found in ponds, lakes or seawater. Like I told you just that they are mostly found in the pond and or lakes or the seawater. You can say watery conditions or a moist climate. Wherever there is a moist climate, you would have seen algae. Okay, so they are only or mostly found in ponds, lakes or seawater. Like sometimes you would have seen in the bricks, on the bricks. Okay, there is this green substance which you see on the bricks. This is the algae. Okay, why? Because there is some moisture on the brick. So because of moisture, because of the moist climate there, they grow on them, and you see on the bricks the algae. They can be unicellular or multicellular. So what unicellular is? The organism which has only one cell, but multicellular is an organism which has more than one cell. Okay, more than one cell. So algae can be unicellular or it can be multicellular. Okay, excessive growth of algae in water bodies kills aquatic organism and makes water unfit for drinking. So this is an harmful effect of algae. It is an harmful effect of algae, that the excessive growth of algae means जब algae की किसी water में, because it always lives in watery conditions in some water bodies only. So जब भी किसी water bodies में there are algae, but
द algae इज प्रेजेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा algae की ग्रोथ हो गई, देयर इज़ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae, तो क्या होगा, जो बाकी के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उस वाटर बॉडी में वो सारे किल्ड हो जाएंगे बाय द algae. हाउ विल इट बी हैपन? सो ये कैसे होगा? बिकॉज algae ऑल्सो नीड्स वॉट ऑक्सीजन and it also respires like the other organisms, other aquatic organisms. So because the excessive growth of algae, because of the excessive growth of algae, there will be no oxygen present in the water, because how means wherein the algae are present in a very large number, so they will absorb, they will breathe in all the oxygen, almost all the oxygen, 98%, and they will kill all the aquatic organism like this. And also the water which is there in the water body, that will become unfit for drinking for the aquatic organism. So this is how, this is a harmful effect of algae which you can see. Okay, now we study protozoa. So what is a protozoa? So protozoa भी जैसे algae, it can be unicellular or multicellular. So protozoa एक unicellular organism है, only and only unicellular organism. Okay, like you can see here that it is a amoeba, it is a protozoa called amoeba. So you can see it has some false feet. It can also change its shape. You can see it can also change its shape, and the false feet which is growing here and this here. So this is called pseudopodia. It is extending its false feet called pseudopodia. And why it is extending? To engulf its food. So this, with the help of pseudopodia, it engulfs its food, and then the food goes into its body, and all the process of digestion takes place in its body only. And this is a microscopic picture of an amoeba. This is a microscopic picture because this amoeba is a microorganism. So it is a unicellular, because it is a protozoa, it is a unicellular organism. Okay, it comes in the category of protozoa. It is a unicellular organism. And in this picture you can see this is called paramecium. One fact about paramecium, it has cilia. These are small or long, because some microorganism has long hair like structures, and some microorganisms has small hair like structures. So this paramecium has small hair like structures which is called cilia. So we'll study about them. So what is a protozoa? So protozoa is a unicellular and microscopic organism. Unicellular, which means only one-celled organism. Microscopic, which means it can only be seen with the help of microscope. And it is a microorganism. It is a type of microorganism. So it is a unicellular. इसमें बस एक ही सेल होता है, बस एक ही सेल का बना हुआ होता है, और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक टाइप है. अब इट इज़ मोस्टली फाउंड इन अ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट. अब ये भी मॉइस्ट कंडीशंस में पाया जाता है इन अ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट लाइक द algae. ओके, इट इज़ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट. व्हाट इज़ अ यूकैरियोट? यूकैरियोट एक सेल को बोला जाता है जिसमें कि जो न्यूक्लियस है एंड अदर ऑर्गेनल्स हैं, दे आर बाउंड विद द ऑर्गेनल, दे आर बाउंड विद द मेम्ब्रेन. ओके, दे आर बाउंड विद द मेम्ब्रेन. So that cell is called eukaryote. And the cell which is not bound with the membrane, जिसमें जो membrane है न्यूक्लियस की और अदर ऑर्गेनल्स की और पूरे सेल की जो membrane अगर नहीं होती है, so that cell is called prokaryote.
Okay, that cell is called prokaryote, and the cell which has the membrane, the cell membrane, and all the what cell organelles membrane, so that cell is called eukaryotic cell, and that organism is called eukaryote. So it is, protozoa is a single celled eukaryote. It is a eukaryote, means it has all the membranes. Examples of protozoa are paramecium, euglena, and amoeba. Okay, like I showed you here, this is amoeba and this is paramecium, and euglena is like this. It has also hair-like structures, and that hair-like structures is called flagella. Okay, that hair-like structures are called flagella. So again, this is paramecium, moving paramecium, and this is euglena. It is also hair-like structures called flagella. Now, what is the nutrition of protozoa? So protozoa are heterotrophic and have holozoic nutrition. So heterotrophic का क्या मतलब होता है? It is quite opposite to the autotrophic. Heterotrophic का क्या मतलब होता है? The organisms which cannot make their own food, or they have not the capability to make their own food. Like humans are there, and these microorganisms like protozoa is there. Okay, so protozoa are heterotrophic and have holozoic nutrition, which means, what is holozoic nutrition? This is the process of digestion, egestion, ingestion, and assimilation. All these processes are taking place in our body, and this is called holozoic nutrition. Holozoic nutrition में होता क्या है? First is ingestion, then digestion, then assimilation, then egestion. तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये इसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, इकट्ठे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ लोकोमोशन, कि जो प्रोटोजोआ होता है वो मूव कैसे करता है? सो प्रोटोजोआ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ओनली. अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, सो दिस इज नॉट फॉर एनीथिंग बट इसकी मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए ही ये यूज़ होता है. लाइक यू कैन सी हेयर, इट इज़ अ यूग्लिना and it is paramecium, and paramecium has cilia. You can see it is a small hair like structure, so this hair like structures are called cilia in paramecium. And here you can see euglena, so it has flagella. Okay, it has long hair like structures. Here you can see this long hair like structures, so this is called flagella. Clear? Now we study about harmful protozoans. So protozoans are harmful. What are the harmful effects? How it can be harmful? So you know what is a parasitic protozoans? Parasitic protozoans वो protozoans होते हैं जो दूसरे living organisms के bodies के अंदर रहते हैं और उनसे सारी अपनी जो nourishment है, food है, या आप कह सकते हो जो nutrients है वो derive करते हैं. So they live inside the bodies, वो उनके bodies किनके of other living organism, दूसरे living organisms की bodies के अंदर वो रहते हैं and derive their food from them, और उनसे अपना food खाना लेते हैं. Like this plasmodium is a protozoa, so here all this is written is protozoa, and here these are the diseases they cause. ओके, सो दीज पैरासिटिक प्रोटोजोआन्स क्या है? वो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज़ में लिव करते हैं एंड अपना फूड उधर से ही डिराइव करते हैं. अब पैरासिटिक प्रोटोजोआन्स जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में लिव करते करते उनको डिसीज़ भी दे देते हैं. लाइक प्लाज्मोडियम इज़ देयर. सो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम is a parasitic protozoa. Parasitic protozoa, why? Because it lives in the other living organism's body, and what does it do? It transfers malaria. It transfers the malaria disease. So plasmodium is a type of what? Parasitic protozoan.
Now trypanosoma is like that only, it causes sleeping sickness, entamoeba amoebic dysentery और giardia giardiasis. So ये सारे जो है डिसीजेस हैं जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोटोजोआंस, पैरासिटिक प्रोटोजोआंस इनको कॉज करते हैं, इन डिसीजेस को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉज करते हैं. अब ये जो पैरासिटिक प्रोटोजोआंस है, जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये लिव करते करते फूड अपना डिराइव करते हैं और डिसीज़ उनको प्रोवाइड कर देते हैं और दे देते हैं, सो दे आर कॉल्ड होस्ट. जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो रहते हैं, सो दीज आर कॉल्ड होस्ट. ओके, होस्ट, HOST. सो वी कैन से किसी होस्ट के अंदर दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम. नाउ so this is a structure of amoeba. So this is a structure of amoeba. You can see amoeba has a various shapes, it can change its shape also. So you can see this is the membrane, this is the membrane of amoebic cell. So this is called the cell membrane. You know what is a cell membrane? Cell membrane पहली बात प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, प्रोटीन्स का बना हुआ होता है. और सेकेंड चीज़, ये जो सेल होती है एक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल होती है वो जो उसको प्रोटेक्ट करती है. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो ऑर्गेनिजम्स की एक सिंगल सेल को शेप दे देता है. और इट कैन बी लाइक दिस, इट हैज शेप्ड दिस अमीबा लाइक दिस. सो सेल मेम्ब्रेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल को शेप दे देता है, इट गिव्स शेप टू इट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है उसको. एंड ऑल्सो क्या करता है, ये जो अंदर से बाहर जो न्यूट्रिएंट्स है या मिनरल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं बॉडी सेल से बाहर और बॉडी सेल के अंदर, ये आने जाना इसका क्या करता है, ये इसको कंट्रोल करता है. ओके, देन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होती है जेली लाइक ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस होता है जो कि जिस पर जो सारे इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो कि स्मॉल पार्ट्स हैं. सो जो भी साइटोप्लाज्म पर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट कर रही होती है. ये दिस इज़ द साइटोप्लाज्म. जो भी इधर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है सेल बॉडी के अंदर, सो दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. देन न्यूक्लियस. सो इन द सेंटर ऑफ द cell there presents a nucleus which is the brain of the cell that it controls all the activities of the cell. Okay, that's why it is called the brain of the cell. Like the brain of the body itself is called the brain, so the brain of the cell is called nucleus. Then vacuole. So what is a vacuole? Vacuole एक सेल ऑर्गेनल है जो कि अपने अंदर फूड, वाटर और वेस्ट्स को स्टोर करता है. जो भी सेल के अंदर जो फूड, वाटर, वेस्ट आ रहे होते हैं, सो वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, वो वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं. फिर स्यूडोपोडियम क्या है, ये फॉल्स फीट होती है अमीबा की, फॉल्स फीट होती है लाइक दिस, जिसमें कि जैसे इधर अगर इसका फूड है, ये इसका फूड है, सो वो अपने जो साइटोप्लाज्म है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेगा लाइक दिस, एक्सटेंड करेगा एंड और उसमें उसकी हेल्प से, स्यूडोपोडियम की हेल्प से वो अपना फूड अपनी बॉडी में एनगल्फ कर लेगा. ओके, लाइक ये अपने बॉडी में ये जो फूड है ये एनगल्फ कर लेगा. Now this all was the general structure of the amoeba. So next is paramecium. So paramecium is also, like I told, cilia, hair-like structure which helps in the locomotion or the movement of the cell. And cytoplasm which is a jelly-like fluid substance जिसपे all the cell organelles float. Okay,
and oral groove. Oral groove is this is called जिसमें by the help of which it engulfs its food. And then nucleus. Nucleus is the brain of the cell. This is the brain of the cell present in the center or in the periphery of the cell. Then food vacuole. फूड वैक्यूल सो जैसे वैक्यूल क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं फूड, वाटर और वेस्ट को. सो जो वैक्यूल फूड को स्टोर करता है, सो दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल. जो वाटर को स्टोर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वाटर वैक्यूल. एंड द वैक्यूल विच स्टोर्स वेस्ट, दैट इज कॉल्ड वेस्ट वैक्यूल. एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. So this is the general structure of paramecium. Now we study about virus. The last topic of this video is the virus. Now we have completed algae and protozoa. Now we start with virus. So viruses are microscopic. Microscopic means उन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई. ओनली हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. सो दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. एंड इन्फेक्शियस दैट मीन्स वो हमें बहुत सारी जो है मैनी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय वायरसेस ओनली. सो वायरसेस माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी हैव टू सी विद इट विद अ माइक्रोस्कोप. And they are infectious disease. That means they cause many diseases to human, to plants, to animals. Okay. That can only replicate inside a host cell. So microscopic होते हैं, infectious organisms है. Infectious means they cause diseases in the other organisms and that can only replicate inside a host cell. What is a host cell? जिसके अंदर जो living organisms हैं वो जाके live करते हैं उस दूसरे host, एक host cell में living organism, एक microorganism एक host cell में live करते हैं और उससे सारी जो nutritions है और nutrients है वो सारी derive कर लेता है, जिससे कि जो होस्ट सेल है उसमें डिसीज़ भी कॉस्ट हो जाता है. सो वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रेप्लिकेट होते हैं, यानी कि कहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं और डिवाइड होते हैं. सो ओनली एंड ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल. होस्ट सेल के अंदर ही वो डिवाइड होते हैं. होस्ट सेल जिसमें वो रहते हैं, दे लिव इनसाइड अ होस्ट सेल एंड दे कैन डिवाइड ओनली इनसाइड द होस्ट सेल. Then they are living only inside other living cells. So they are living only inside other living cells. दूसरे living cells के अंदर ही वो लिव कर रहे होते हैं. लाइक हेयर वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के ही अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं. इफ़ दे आर आउटसाइड अ होस्ट सेल दे कैन नॉट रेप्लिकेट. वी विल स्टडी अबाउट इट वाई दे कैन नॉट. एंड दे आर लिविंग ओनली इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग सेल्स मीन्स सिर्फ और सिर्फ वो जी सकते हैं, दे कैन लिव ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स. अगर वो एक लिविंग सेल के आउटसाइड है, उसके बाहर है, सो वो ऐसा प्रेडिक्ट करेंगे दैट दे आर नॉन लिविंग एंड वो क्या है, हिल भी नहीं सकते. सो प्रेडिक्ट करेंगे कि वो नॉन लिविंग है. A virus is like a non-living thing outside the body of other organism. Okay, so दूसरे organisms और hosts के जो body है उसके अगर बाहर वो live कर रहे हैं, so they are what? Non-living. They predict as like a non-living thing. एक चीज़ की तरह, non-living thing की तरह they look like. Then therefore it is a borderline between a living and a non-living thing. So how? वो border line में क्यों होते हैं living और non-living things के बीच में? जो living है, एक वो living organisms के अंदर ही वो replicate कर पाते हैं. They can divide or reproduce inside the living organisms only and also live inside a living organisms only. So they are living inside living organism, but they are not living. They are look like that they are not living. They look like that they are dead inside outside the living organism. If they are on the bed, so they look like that they are dead,
they do not even move, because they are a non-living thing outside the body of other organisms. Then, so it is a borderline between living and non-living. It is a living or a non-living. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दे प्रेडिक्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड नॉन लिविंग थिंग कब, जब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और हॉस्ट सेल के बाहर वो रहते हैं. सो दे लुक लाइक नॉन लिविंग. सो बॉर्डर लाइन, इट इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में एज अ बॉर्डर लाइन वायरस होते हैं. नाउ outside the body of a living organism, they do not show any reaction and hence can be crystallized and stored like non-living things. So एक living organisms के बाहर वो कोई भी reaction नहीं दिखाते. Like I told you, they are a non-living thing outside the body of other organisms. So outside the body of the host cell or the living organism, they do not show any reaction. That means they are non-living. कोई भी reaction वो नहीं दिखाते. They predict like they are dead. So they do not show any reaction and hence can be crystallized and stored. So when they are outside the body of the host cell, so they can be crystallized, they can be crushed, and they can also be stored like the non-living things. They can also be stored like the non-living thing. So this is a fact about the virus. So so हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, फंजाई के बारे में, एल्गी, प्रोटोजोआ. सो वायरस ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट नॉट अ लिविंग एंड नॉट अ नॉन लिविंग. ओके, सो नाउ दे वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से भी छोटे वो होते हैं. लाइक बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, अबाउट 15 माइक्रोमीटर, मैक्सिमम 15 माइक्रोमीटर के वो होंगे, बट उससे कम के भी होते हैं, मैक्सिमम 15 माइक्रोमीटर. सो जो बैक्टीरिया है वो इवन स्मॉलर होते हैं वायरसेस, जो वायरसेस होते हैं वो इवन स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से भी. बैक्टीरिया से इवन स्मॉलर वायरसेस है. सो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो आंसर इज वायरसेस. वायरस सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्स हेल्प्स इन अटैचिंग द वायरसेस टू द होस्ट सेल. जो वायरसेस हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, लाइक आई शो यू हेयर, यू कैन सी ये जो रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर स्पाइक्स, दीज आर कॉल्ड स्पाइक्स. सो इन स्पाइक्स की प्रेजेंस से क्या होता है, इन स्पाइक्स की प्रेजेंस से उन्हें हेल्प मिलती है. किस चीज़ में उन्हें हेल्प मिलती है, किसी हॉस्ट सेल के साथ जाके अटैच होने पर. Okay, they get help to attach with the host cell. So अगर उन्हें स्पाइक्स की होता है, सो इन स्पाइक्स का ये फंक्शन है कि वायरस को ये किसी हॉस्ट सेल में जाके वो इसको अटैच करवाए. ओके, एंड वायरल डिसीजेस आर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस. सो वो सारे जो वायरल डिसीजेज हैं वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड होते हैं, सो वायरसेस से सारे जो वायरल डिसीजेस होते हैं दैट आर कॉज्ड. सो एग्जाम्पल्स आर कॉमन कोल्ड एक उसका एग्जाम्पल है, और सेकेंड इज चिकन पॉक्स also caused by viruses, and third is hepatitis B, and also there is measles. So these common cold, chicken pox, hepatitis B, measles, also there is AIDS. Okay, AIDS. So these many diseases are caused by viruses that are called viral diseases. So now finally we look into the structure. This is the general structure of viruses. So you have seen this is the spike of the virus, and this is the envelope. This purple structure is the envelope of the virus. Like we have the animal cell has the cell membrane, like that only virus has envelope.
Okay, and this blue structure is called nucleic acid. It is the nucleic acid, and this hexagon, so this is called capsid. This is called capsid and capsomere. So like we have the cytoplasm in our body, so this is the capsomere. Okay, so this was the general structure of virus, that has a spike, okay, which helps it to attach with a host cell, and it has envelope like cell membrane, and it has the nucleic acid. This is the nucleic acid, and also the capsid. This is the capsid, hexagon shaped, and capsomere like the cytoplasm fluid substance. This yellow substance is called the capsomere. So this comes to the end of the video. Please subscribe to our channel and also like this video if you understand all the things. Thank you.